The journey has been very exciting. मेरी अपनी journey जो has been very exciting. When I look back in retrospect, I see myself as a timid, overprotected girl. That's how I started off. Over the years, the choices that I made for my career development, or the choices that I think that I made, what are the directions that were given to me? I was, as a student in school and in college, I was an outgoing student. I was very active in extracurricular activities. I was pretty okay in academics. So one thing was for sure that, a necessary level of confidence that's required to face the world, I was equipped with that. And I always thank God that Khuda Ta'ala ne mujhe aisi environment di. I come back from an armed force background. My father was in army. So we got a very disciplined and defined environment with a lot of opportunities for personality development, character development. We were into academics. We used to have time for sports and outdoor activities. और फिर हम वैसे भी उस दौर के बच्चे हैं जिस दौर में टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर नहीं किया हुआ था और हमारा टाइम दिन का एक बेशतर हिस्सा आउट देयर इन द प्लेग्राउंड गुजरता था. टीवी के ऊपर कोटा होता था. 1 घंटा आप टीवी देख सकते थे और वो भी अगर कोई बड़ा मशहूर प्रोग्राम चल रहा होता था तो टीवी देखने की इजाज़त थी. हमारी ज़िंदगियों में एज किड्स आई डोंट रिमेंबर टीवी एज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल component, whereas today it is. So when I look at my own journey, मुझे ऐसा लगता है कि I have been taken to places instead that I went to places. Where I am today, probably this is not what I had envisioned. I wanted to be a doctor as a kid, and for a very long time in my life, I used to feel sad that I could pursue the medical side because I wanted to be a doctor. And later on I realized that, actually I wanted to be a doctor, but not for probably the medical science reason, but probably one of the personality traits that I had was based on my interpersonal skills and my interest in meeting up with people and being in an interactive environment, and I landed up in the field of marketing, advertising, image management. The turn of events in my life have been like that, and the turn of events have been the challenges. और शुरू में लगता था in early years कि oh gosh, what is it? ये तो बस अभी तक तो ख़त्म हो जाएगी ना life. इतना बड़ा challenge आ गया, and then after going through that, learning a little more, one thought, oh my God, that's one of the things that you had to learn, and it's just an experience. And then what's happened. Now in retrospect, I feel कि challenges खुदा ताला आपको देता है because ये opportunities to growth है. कहीं पे pain का element आपको वो देता है because you discover yourself. अगर ऐसा ना हो तो शायद somebody like me would not even get out of bed and would just keep reading a book and would want a supply of tea or coffee coming in, and I would probably not even do anything else. बस मैं खुशी से तसल्ली से सिर्फ किताब पढूं, खाऊं पीऊं और सो जाऊं और फिर तसल्ली से किताब पढूं. And I'm glad he did not let that happen, and he helped me grow. The business that we set up was an entrepreneurial initiative, and somehow teaching के साथ मेरी रग़बत या interest हमेशा से था. But at the early years of my work life, what I heard from people around me was that teaching is no profession, and teaching is a profession जहाँ पे शायद आप इतने पैसे ही ना कमा सकें कि you could lead a good, healthy, happy life, and yes, the material gain and the economics matter. I've had an opportunity of sitting through the CSS exams, and with the conviction that I was not fit for that. I cleared it. I just did it for my father so that he doesn't feel that I was shirking away from the load or the pressure or
So I did CSS, and I told him that I can only join in if he allows me to go to police. And at that time, it was not a profession for girls. It was not considered as a profession for girls. So obviously, I was not encouraged to go into police, and that was my reason to not get into the civil administration or the public sector, because I thought, that's too monotonous and too regular, and all you have to do is say yes, and there is no other way of creativity. I was partially unaware that public sector में भी बहुत आपको opportunities मिलते हैं, but I was not clear, so I didn't opt for it. And many times I was told that I've missed the opportunity of becoming or having a successful, easy life. Maybe true, I don't know, I cannot comment on it. But I definitely feel two things. One, the contentment of evolving into a reasonably okay kind of a person and a good professional that I can put a small little claim on. And that too on the basis of the feedback that we get from our friends, associates, clients that we work with. और वो feedback यही होता है कि अगर आप से जो expectations हैं वो पूरी हो जाएं in a stipulated time period, so you're considered a good professional. And that way we've got a good rating and a good feedback coming in. Our professional associations with some lead brands go beyond 14-15 years, and when I look at the client list that we have for our company called iManagers, driven from image management, we see we've had a diversified experience exposure. At one time, if we are working with a fashion designer or one of the lead fashion designers, on another hand, we might be working with a company from Sialkot, a surgical instruments company. At one time, if we are working with a real estate developer, and again, one of the lead real estate developers. On another hand, we might be working with international airline. I'm not taking names primarily, but the exposure had been diversified and working in different industry segments. Not only that one learns the traits of the industry, you get a very good exposure of different set of people. And I think at the end of the day, what matters is your exposure and your experiences. जो भी आपकी टेक्निकल एकेडमिक स्किल सेट होती है, वो जो भी आप थियरी पढ़ के क्लास से आते हैं, वो अगर आपको उसकी एप्लीकेशन का मौका मिल जाता, और उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, और फिर उस एप्लीकेशन का जो मौका मिल जाता है, तो यू डेफिनेटली ग्रो एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल. और वो नेक्स्ट लेवल हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है. फॉर मी इट हैज़ हेल्प्ड मी नॉट ओनली set up the business, have it stabilized, get it going, but also evolving into a human being that understands now or partially able to comprehend the beauty of the universal phenomena around us. All of us are governed by the universal phenomena. We cannot be beyond it. So that's how I would define my journey. Image management has a very broad spectrum. Being honest, I feel it is your image that makes you sell at the end of the day, be it a product, brand, idea, individual or ideology. इमेज मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत और उसकी एप्लीकेशन हर वॉक ऑफ लाइफ में नज़र आएगी एट ऑल डिफरेंट stages of life. For example, at a micro level, I'll give you this example. In a family, a kid is perceived in a certain way. वो जो perception positioning है, वो उसकी image हो गई है. For example, if you talk to a mother out of few kids that she has, तो वो आपको बता सकेगी कि ये मेरा बच्चा ज़रा लड़ाका है, ये मेरा बच्चा ज़रा खामोश तबा है, ये मेरा बच्चा ज़रा बड़ा ज़रा हेल्पफुल है, ये मेरा जो बच्चा है या बच्ची है ये घर के काम काज में मेरी हाथ बटा लेती है बट दूसरी नहीं बटाती. सो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, दिस इज़ व्हाट द इमेज इज़ अबाउट.
और ये हमारी जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ये हमारी अपनी परसेप्शन होती है दूसरों के बारे में. अब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सल फिनोमिना दैट हम जैसे ही किसी को मिलते हैं, सो अब वो आप उसको फ्रीक्वेंसी वेव्स कहें, आप उसको एनर्जी वेव्स कहें, हम जैसे ही किसी को मिलते हैं तो हम उसके बारे में एक परसेप्शन, एक इमेज अपने जहन में बनाते हैं. It is based on different facets, it is based on different factors. This could be related to your own experiences in life, this could be related to the appearance of the person, this could be related to the environment, the situation in which you are interacting. So ये जो सब कुछ मिल मिला के होता है, तो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं on a level जहाँ पर हम लोगों को परसीव करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं in a certain way, और फिर हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते टूवर्ड्स दैट. तो यही फिनोमेना जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, विच एक्चुअली मीन्स दैट इमेज मैनेजमेंट आपका एडवांस के लिए लेवल है फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. तो आप इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर पीपल टू कम इन एंड आस्क फॉर समथिंग, यू क्रिएट अ परसेप्शन फॉर अ सर्टेन पोजिशन एंड देन यू एक्चुअली प्रमोट दैट ब्रांड और आइडिया और एन आइडियोलॉजी, और आपको उसको डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं. ब्रांडिंग उसके अंदर डेफिनेटली शामिल होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होती हैं, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली मेक अ होल. सो इट्स लाइक अ 360 डिग्री प्रोग्राम, जिसके अंदर आपने एडवर्टाइजिंग भी करनी है, जिसके अंदर आपने मार्केटिंग भी करनी है, और उसको फिर यूज़ करना है फॉर परसेप्शन इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग. सो इन अ वे हम जो काम करते हैं और जो हमारे काम की नौयत है, इट्स रिलेटेड टू परसेप्शन इंजीनियरिंग, एंड इट्स ऑल ऑफ अस आर ऑपरेटिंग ऑन दैट. आप सोचिए कि आप इन अ डे, whatever you're doing, whatever you see, whatever you come across, whoever you meet, आप अपने डेटा बैंक में, अपनी मेमोरी में सेव करते जाते हैं उनको इन डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योर ओन परसेप्शन ऑफ दैट. वो दूसरा बंदा या वो चीज़ जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल हो या ना हो, यू नेवर नो. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछें तो शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड से रेड कलर इज एसोसिएटेड विद इमरजेंसी, whereas this might not be true. Red color could be associated with a probably bridal dress or happiness or warmth, but क्योंकि खून लाल रंग का होता है तो हम perceive करते हैं कि जहाँ पे red होता है ये कोई ना sign of emergency. Now that's our perception. For some people white will be classified in a different way. For somebody like me, orange would be the best of the best. So हम अपनी perceptions के through काम करते हैं. इमेज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू परसेप्शन मैनेजमेंट. Branding and image management are integrally related. Branding is part of image management. Branding is the way you want to show something, and the way you want to show something is related to your bigger objective of creating that image in the mind of your targeted audience. Now this could be for an ideology, you want people to understand it in certain way, तो आप उसको brand करते हैं in a certain manner. आप उसकी बात करते हैं. अगर किसी product line की और किसी individual brand की, तो हम जो brands use करते हैं in our daily lives, and we choose, let's say there are 10 brands of beverages and you pick up one particular, तो वो जो आपकी choice है ना, वो govern होती है, उसके पीछे data processing हो रही होती है. You look at it, क्या अच्छा packaging अच्छी है, ओ इसका मैंने ad देखा था, I heard somebody mentioning about this brand, तो that's how you pick up that brand and put it in your shopping cart. तो वो जो ब्रांडिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वन पार्ट ऑफ इमेज मैनेजमेंट है. ब्रांडिंग इज वन टूल ऑफ शोइंग. अब उससे आगे जो जाना है कि वो जब आपने एक ब्रांड को देखा, उसको यूज़ किया, उसके बाद जो आपका उसके साथ एक्सपीरियंस था, नाउ दैट्स वेयर द होल इमेज पोजिशनिंग इज बिल्ट ऑन. सो इमेज मैनेजमेंट का एक पार्ट है ब्रांडिंग. इट्स वन कॉम्पोनेंट. Let's say out of a whole, I would say 1/4 is branding. That's how it is.
So branding is part of image management. देखिए जी, ये जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है ना, ये बड़ा ही सेक्रेड रिश्ता है। जो टीचिंग प्रोफेशन में लोग आते हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। इन एडिशन to the economic gains, in addition to the material gains, in addition to their career development pursuits, एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने बच्चों को, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, अपनी बातों से ज़्यादा एक्शंस से पीपल लर्न। फॉर एग्जाम्पल, the teachers that I remember from my life are the teachers who were not just only good in theory teaching, they were the teachers who were the role models, जो अपने behavior से, अपने attitude से, अपने conduct से एक impression student के ऊपर छोड़ते हैं। Now today's dynamically driven business world, in today's time of consumerism, in today's time of material race, teaching भी एक ऐसा profession बन गया। There is nothing wrong. I'm not saying that you cannot or you should not get material gain out of teaching, but आप सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी multiplier impact of material gain के लिए मत यूज़ करें। एक टीचर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कहता है वो खुद करके दिखाता भी हो तो फिर ही सिखा सकता है। If you don't do that, obviously that's what we see around us, कि वो जो commercialism है, it has taken over the spirit of teaching. So किसी भी इंसान को अगर अच्छा टीचर बनना है तो उसके लिए एक बेसिक ingredient बहुत ज़रूरी है, besides the academic skill set or the technical skill set that you're going to teach on, that whatever you are conveying, you should be able to implement it, show it, execute it in your conduct. Once it is there, for example, if you're teaching students कि punctual हो, class में punctual है, for example, universities में हमें अक्सर ये एक वो रहता है, तो if you're not punctual yourself, तो you cannot leave an impression. Somebody wise said, that is, you do not teach people by saying, you teach people by showing. So I think आज हमारा जो थोड़ा सा डिलेमा बना भी हुआ है एजुकेशन इंडस्ट्री में, और हम अक्सर इस बात पे डिस्कशंस भी करते रहते हैं, सोच विचार भी करते रहते हैं, तो वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट एलिमेंट है कि यू हैव टू शो इंस्टेड ऑफ जस्ट से। दैट्स हाउ इट इज़।